Okay, 1, 2, and hey, minute. Here we go. Oh, this one? Good morning. कैसे हैं सब लोग? All good. Sorry to make you come in the rain and through the traffic and all of that stuff. So, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका. I'll tell you a little bit about the show. चलेगा? 20 years ago, I came to Mumbai in 2005, and when I came here, there was not much of a stand-up comedy scene. I think आप लोगों को शायद याद नहीं रहेगा. Back then, comedy clubs थे नहीं. Comedy ज़्यादातर hotels में होती थी, and the thought of doing a India-wide tour for a comedian was a very, very different thought. कि शायद हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा. And because it's one's 20th year, I wanted to do something very, very special. So I wanted to write a show about India and kind of a love letter to India. And with Tribe Vibe and with BMS, we decided to do the largest ever tour that we have ever done across India. So, जो आप देखने वाले हैं, that will be a show that will go from Kanyakumari, where we are starting, all the way up to Kashmir, and it will do the easternmost and westernmost point of India. And हमको एक central theme चाहिए था, which we hoped would bring all of India together, and वो central theme निकला sound. Now, irrespective of where you live in India, irrespective of who you vote for in India, irrespective of what you worship in India, irrespective of your income group, irrespective of where you are, the one thing we can agree on is India is very loud. The WHO recommended sound for just how much sound your ear should hear is 50 dB. In an average Indian city like Mumbai, the volume of the atmosphere is 92 dB. आपका जो AirPods है, अगर उसको 100% पे डालेंगे, that is 100 dB. तो in India we exist with sounds every single day. And I thought, अगर आप सुबह से उठेंगे at 3:45 in the morning to 3:45 in the morning in any part of India, what are the sounds that you would hear? तो उसके बारे में एक शो लिखा है मैंने, because that is the one thing that I think unifies all of us. So is there a sampler that I could work with? Rick, this thing. So I'll just play you some sounds, and you can maybe you recognize some of them or you won't. But come, I'll come here. All right. It's on? Yeah, it's on. Sure? Yeah. No, it's not. One second. So if you wake up at 3:45 in the morning, क्या सुनाई देगा आपको in India? That is the sound of a. आप लोग बोल सकते हैं. It is a कोयल. Wrong. Any other guesses? That is a red-breasted sparrow, जो आपको इंडिया में सुनाई देगा. Then at about 7 o'clock in the morning in India, आपको ये सुनाई देगा. That is the sound of construction. All of India is constructing construction right now. एक दिन ये सारा development खत्म हो जाएगा and we will go into redevelopment the next day. At about 8 o'clock in the morning outside your door in India, you will hear this. Do we know what he's selling? Huh? No? It's fine. Alright, cool. No response is also good. फिर at about 4 o'clock in the at about 9 o'clock in the morning school शुरू हो जाएंगे. You know children going. स्कूल में असेंबली होता था, you remember that? Alright. उसके बाद मे बी आप काम पे आएंगे, मे बी आप जर्नलिस्ट हो, आप ट्रेन लेंगे, या शायद आप काम पे नहीं जाते हो, आप घर पे रहते हो, and it's Sunday and you hear this noise. That is the noise of हाँ चंपी. वर्णन तालियां बजाओ इनके लिए. वेल डन यार, आपको मिला चंपी लाइफ में. हाँ, Champi is not a member of Ananya Pandey's family, by the way. Okay, maybe you leave work, you hear this noise. That is the sound of a rickshaw. We can agree we have too many rickshaws in India. Alright. Maybe you hear music in the rickshaw. Music sounds like this. You know this song? Coolest thing Gujaratis have done in 50 years. Also, only cool thing. Let's move on. Never mind. Maybe you know Lok Sabha शुरू हो जाता है. So at 10 o'clock you will hear this. This is the sound of
politicians thumping in parliament, but we will also go all across India. So I don't know if you know this. कोई त्रिपुरा गया है कभी लाइफ में? हाँ, आप गए त्रिपुरा में? ये देश लंबे पाइनएप्पल होते, बड़े साइज वाले वो क्वीन होते हैं और छोटे साइज वाले किंग होते हैं। त्रिपुरा में फीमेल पाइनएप्पल्स होते हैं, which are the biggest pineapples in India. या फिर आप तेलंगाना जाओगे, तेलंगाना में आपको ये सुनाई देगा, वाह, ये बात है, भाई वाह। कभी मुशायरा देखा आप लोगों ने? That is the sound of a मुशायरा in तेलंगाना. राइट, अगर आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में आपको ये सुनाई देगा, एक ठो। किसी को मालूम है एक ठो क्या होता है? एक ठो, एक ठो मीन्स वन और टू, बट एट लीस्ट वन. सो इन पटना, एक ठो इज द नंबर ऑफ कप्स ऑफ चाय यू विल हैव पर आवर. ऑलराइट, कर्नाटका गया है कोई बैंगलोर से? कर्नाटका, दिस इज द साउंड ऑफ कर्नाटका, which is stolen from Africans. All right, maybe we can do this. This is my favorite sound, Rishikesh. ये एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है जो इंस्टाग्राम का सेल्फी लेते हुए पानी में गिर गई है और डूब रही है. इट्स माय फेवरेट साउंड ऑफ द एंटायर शो. Maybe you will hear, you know, I think अगर इंडिया में, you know, at about 5 p.m. मच्छर आने लगते हैं, so you'll hear this. Oh, not this. Sorry, one second. This is the sound of the मच्छर वाला रैकेट. Only India has this racket, by the way. Maybe at 10 o'clock आपको ये सुनाई देगा. अरे ये नहीं, sorry, ये वापस आ गया. Sorry. ये. One second. ये क्यों वापस आ गया? सॉरी, दूरदर्शन करने की. आपको याद है ये? दिस इज द साउंड ऑफ, याद है जब एक्चुअल जर्नलिस्ट हुआ करती थी? लेट्स मूव ऑन. दूरदर्शन पे याद है वो एक आती थी शाम को, मे बी 12 o'clock ट्रक्स आने लगते हैं. मेरे ग्रैंडफादर वाज अ बुद्धिस्ट लीडर, सो दैट्स समथिंग आई रिमेंबर फ्रॉम हिम. आपको शायद ये सुनाई देगा इंडिया में. वन सेकेंड. एंड आई थिंक अगर आप देख लो द साउंड ऑफ इंडिया, अगर आप शाम को जाएंगे अपनी छत पे, वो थोड़ा सुनेंगे इंडिया का साउंड, आपको ये सुनाई देगा. आपको शायद एक शादी दिखेगी. So India is just basically sounds. And इस शो के दौरान I hope to take you to every state in India, every time in India, every part of India. And I hope with the pace of a cricket match, we can make you feel good about the country and have it live in your ears and in your heart. That's it. That's the show. Thank you so much. Okay.
Thank you, Veer. If I can just ask you to stay back for a bit. Cool. But thank you for giving us that taste. And if that's the teaser, I think we're all going to go through the sounds of India. Thank you. But of course, behind every great show is a team that makes that madness possible. And that's where Tribe Vibe comes in. They're the producers and the promoters of this tour. And they've been behind some of India's most memorable live events. The kind that make you laugh, cheer, sing along, and then forget that horrific parking price that you paid for. With Sounds of India, they're pushing the boundaries yet again. To share more about the scale and the vision of the tour, I want to call upon Shoven Shah, the founder and CEO of Tribe Vibe Entertainment. Before we hear more from Shoven, may I please request, Shoven, please come on. If I can please request Veer and Shoven to unveil the creative poster of the Sounds of India. Sounds of India, produced and promoted by Tribe Vibe Entertainment and curated by Zazu Productions. They will not just give us a sneak peek into this nationwide theatrical comedy tour. This is something that goes beyond stand-up. It's humor, it's music, it's nostalgia, it's everyday life. It's stitched together in Veer Das's inimitable style. 1 second. Yeah, I'm going to leave you two to it. Shoven, you paid for it, yeah, so you should. We do it together. Okay, 1, 2, and. Hey, minute. Here we go. This is on sale at OLX tomorrow. आपको मिल जाएगा ना? Okay, हाँ. If you could just have the two of you for a moment, just for the photos, for whoever may not have yet taken it. Thank you, Veer. I'm going to have you back in a bit. Shoven, if I can please request you to stay back and just give us an insight into the scale and the vision of the tour. Yeah. Thank you, Veer, and thank you everyone for coming today and joining us on this special occasion. At Tribe Vibe, we believe that live entertainment is so much more than what happens on stage. It is those unforgettable memories that we take back home after the lights go down. Veer has been a fantastic partner in that journey. Every show with Veer feels so fresh, bold, and the way he connects with the audience is so real, be it a small room in a trial show or a couple of hundreds of people in an auditorium or thousands in a stadium show. Comedy has, for Tribe Vibe, comedy has been an integral part of our business now, along with music. If you ask about comedy, a couple of years back, comedy was restricted to just a few small artists, couple of small rooms, but now comedy has become a part of everyone's entertainment culture. It has completely exploded. Today we can say that as Tribe Vibe, we've taken comedy to multiple cities. We've worked in tier 2 markets, tier 3 markets, places like Shillong, Guwahati, Surat, and many more cities. For Sounds of India is a special milestone for us. It's our biggest tour which we are doing with Veer. We will be reaching out to a minimum of 100,000 fans across India. The tour will kickstart in Kanyakumari, which is the southernmost tip of the country, and we will cover all the 4 corners of the country. It's a first-of-kind theatrical comedy format elevated with world-class light, sound, and production, creating an immersive audio-visual experience on Indian soundtrack. We at Tribe Vibe have been very fortunate to produce the best of music and comedy shows with multiple artists across the country, but working with Veer is special. We've worked with Veer in his last tour, which was a Mindful, across multiple cities and multiple shows, ending with the finale in NSCI Dome, which was the Netflix special. And of course, every show of Veer is always sold out. I would like to take this opportunity to tell Veer that we are extremely grateful for trusting us and Book My Show over the years, right from inception. We've worked with him, I think, for all his shows, and we are so super excited to be part of this tour, which is definitely going to be the biggest one. And thank you, Veer, for giving us the opportunity to produce this show and be a part of your vision and journey. Thank you. तो छोटा सा ट्रेलर बनाया है, बजाऊं आपके लिए? हाँ, बस 90 सेकंड लगेगा and then you can all. How quick on his feet Veer is. This is your chance to get back at him on everything that you wanted to. But the floor is yours, really. But I just had a small request. We would really encourage if the questions are kept around the tour and Veer's work in it. It would just be the most respectful here. The floor is yours. Can we have some mics around? If any questions, we can.
If you could just please share your name and the publication or the channel you represent, and then you can please. हाय वीर, अमजद फ्रॉम मल्टी स्टार्स। ये कॉन्सेप्ट जो बनाने का आपके दिमाग में कैसा आया? मतलब कुछ इंस्पिरेशन थी या? आई थिंक काफ़ी साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। पिछला जो वर्ल्ड टूर हुआ था, इट वाज 33 कंट्रीज, एंड आई थिंक इंडिया को काफ़ी याद करता हूँ। आई थिंक टू रियली अंडरस्टैंड समथिंग एंड टू लव इट, यू हैव टू मिस इट समटाइम्स। तो देश की बड़ी याद आती है, और जब देश की याद आती है, देन आई थिंक वो याद एक आवाज़ होती है। अगर आप इफ़ यू मिस इंडिया एवर, यू विल हियर इट बिफोर यू सी इट। तो आई थिंक that was it. और अगर आप कभी छत पे जाएंगे रात को, you'll hear everything, and I think that's something beautiful about our country, is we all get to hear it equally, no matter where we live. So that was it. I think missing India, traveling too much of the world, बहुत सारा jet lag, close your eyes and you hear home in your head. That's the concept of the show. Hi, Visa. Samir here from Movie Talkies. So, what was the source of the sound recording and everything? And will it be played across all the shows? Like, let's say Kanyakumari ka hai, and then you will be like, showing them or let them listen all that Kolkata sound also. If you come to the show, we will have upwards of 65 sounds. So it is very much like a cricket match. Pace of a cricket match as well. बहुत तेज जाएगा शो. We will take you to every state in India, in fact. तो हर स्टेट से एक साउंड मिलेगा आपको, एंड देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स इन द न्यूज़ दैट वीक, उसका भी साउंड निकलेगा. इट्स अ कॉमेडी शो एट द एंड ऑफ द डे, तो थोड़ा टॉपिकल तो होना पड़ता है. बट आई थिंक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आप क्या क्या सुनेंगे, हर स्टेट से आप क्या क्या सुनेंगे, एंड देन इस हफ्ते आपने क्या क्या सुना. दैट्स ऑल्सो द शो एज वेल. हेलो वीर सर, दिस इज विनय. ये सारे साउंड में अगर आपको बताना हो कि कोई एक ऐसा साउंड जो आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, और ये सारे साउंड में आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सुनने में कौन सा लगा, जो आपको पीसफुली इंटरेस्टिंग लगा और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग? अच्छा, पीसफुल, इरिटेटिंग और सिर्फ दो फेवरेट. आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट साउंड मुंबई ट्रेन साउंड है. मुंबई की सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगती है कि एक नंबर होता है ना, पाई इज 3.14, लेकिन मुंबई में पाई 4 होता है. क्योंकि मुंबई की ट्रेन में अगर आपके पास 3 सीट है लेकिन 0.14 ऑफ सीट बचा रहता है, उसको हम 4th सीट बनाते हैं मुंबई में. एंड आई थिंक मुंबई की ट्रेन में एक सपनों का डब्बा है वो, और हर किसी के सपने के लिए हम स्पेस बनाते हैं मुंबई में. सो आई थिंक मेरा फेवरेट साउंड मुंबई के ट्रेन की आवाज़ है, बिकॉज दैट मीन्स कि आपके सपने के लिए मुंबई में जगह है, और वो ट्रेन में दिखता है आपको. सबसे इरिटेटिंग साउंड, कुछ इन्फ्लुएंसर्स की आवाज़ है इसमें जो आपको सुनाई देंगे, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन शो में बेहतर आइए, आपको सुनाई देंगे, आप पहचानेंगे भी उनको अच्छी तरह से. हाय वीर, हियर दिस साइड ऑन योर सेंटर. मेरा नाम विशाल है और मैं बजुगा से हूँ जी. इस तरह की चीजें को जब प्लेटफॉर्म पे आती है तो काफी सारी रिसर्च लगती है. जी बिल्कुल. आपकी किस तरह की रिसर्च थी शुरुआती दौर में, एंड हाईएस्ट डीबी साउंड कौन सा है आपके हिसाब से, जो आपको लगता है यार इतना डीबी नहीं होना चाहिए और बहुत इरिटेटिंग है ये? अच्छा, मैंने शो के बारे में 5 साल पहले सोचा था, एंड आइडिया 10 साल से मेरे दिमाग के अंदर है, लेकिन आई थिंक 5 साल पहले थोड़ा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे, थोड़ा वर्ल्ड टूर्स मिलने लगे, सो आई थॉट आई शुड डू लिटिल मोर ग्लोबल वर्क, एंड टच वुड, गॉड हैज बीन काइंड, वन हैज बीन एबल टू सी अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड. घर की बहुत याद आ गई. दिस आइडिया नेवर रियली लेफ्ट मी, एंड सो लास्ट ईयर आई स्टार्टेड राइटिंग दिस. बट ये 5 साल से सोच रहा हूँ मैं इतना बड़ा टूर करने, एंड टू हैव अ, जो मैं बोलता हूँ ना, इंक्लूसिव टूर. मैं एक शो लिखना चाहता था कि अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी के फैन भी नहीं हो, अगर आप कभी किसी कॉमेडियन के शो में नहीं गए, और प्लीज जाइए, ये शो फिर भी आपके लिए है. तो अगर आप कॉमेडी के सबसे बड़े फैन हैं, हर यूट्यूब वीडियो देखते हैं, हर नेटफ्लिक्स स्पेशल देखते हैं, आपके साथ साथ फ्रंट रो में किसी का फर्स्ट टाइम है कॉमेडी शो में, वो भी आ सकते हैं, और हम दोनों के लिए इक्वली अच्छा शो है. सो दैट, एंड देन सबसे लाउड साउंड इसमें एक न्यूज एंकर की भी आवाज है इसमें जिनका नाम नहीं लूंगा, उनकी काफी डीबी काफी हाई है. तो
We're Patsy from Rediff.com. I have two questions for you. Ji. First is, how many shows are we looking at when you say tour from Kanyakumari to Kashmir? Also, how has the stand-up comedy scene evolved in India? Ma'am, how many shows are we looking at? As many as will sell. So hopefully we will go to all the cities that we can and keep adding shows. But I think what we would like to do with this tour as well, we've talked about it as well, is not to leave a city very quick. तो अगर हम बेंगलुरु जा रहे हैं, so we'll stay in Bengaluru for a little bit. Do lots of shows in Bengaluru so everybody can get a chance to come and see us. And we are sometimes thinking of doing shows in different parts of the city as well. So within the same city, you will see me in this part of the city and that part of the city as well. So it's not too tough a journey for you. इंडियन कॉमेडी सीन की बात हो, आई डोंट थिंक इट्स एवर बीन अ बेटर टाइम टू बी अ कमेडियन इन इंडिया. अगर आप एक नए कमेडियन हैं, आप सोशल मीडिया पे एकदम से घुस सकते हो, आपका वीडियो वायरल जा सकता है, आपकी ऑडियंस पहुंच सकती है. We are the largest smartphone audience in the world. We are the youngest audience in the world. And we are a very politically aware, educated audience. Three things work really, really well for stand-up comedy. So I don't think it's ever been a better time. अगर आप म्यूजिक में देख लीजिए, अगर आप कॉमेडी में देख लीजिए, Indian comedians are selling more than most of the foreign acts that are visiting India right now. So as Indian artists, we have waited a very long time to do Indian material and to have our people come out and support us. It's a very good time. Hi Veer, Sana here from India Today. Hello. Firstly, tell me, you spoke about your favorite sound, but what is that one sound that reminds you of home? Like, which is that one sound? There are two, I think. Dogs. My wife and I have adopted two stray dogs in Goa. 3:30 बजे जब गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, the dogs will come out and you'll hear them. So I think for me that's the sound. And then my grandfather was a Buddhist leader, and there's a chant called Namya Horinge Kyo. And so people of every religion used to come to our house and chant with my grandfather. So I think that sound also reminds me of home and how diverse India is. Right. And you spoke about how it's the best time for comedians right now. But also tell me, how important is it to reinvent yourself? Because this is something we don't actually expect a comedian to do. Yeah. So how important is it to kind of keep reinventing and revamping your material and content and try out different genres? I don't think it's important to reinvent yourself. I think it's important to scare yourself. What am I afraid to write? What is, with this, the thought was, can I make you feel with a comedy show how you feel when India wins a cricket match? Utni khushi. So then can I take you through the pace of a cricket match? 50 overs, can we go like it's a one day? That was very scary to write. So that's what I wrote. And I think if you scare yourself and you challenge yourself, reinvention will come. This thing. I also know I'm very fortunate to have an audience that comes back to see me. तो उनकी expectation बहुत बड़ी है. उनको repetition, it will not work for them. So if you come out and say, देखो अभी मेरा बड़ा स्टेडियम, स्लाइटली फैंसियर सूट, 2000 और लाइट्स, स्मोक मशीन वगैरह, मेरा ऑडियंस नहीं देखता है वो सब. मेरा ऑडियंस देखता है बिकॉज दे आर नॉट फैंस, दे आर ऑडियंस मेंबर्स. सो दे स्पेंड मनी, दे हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस. सो दे एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट्स, दे एक्सपेक्ट स्टोरीज, दे एक्सपेक्ट अ शो. So I have to live to that expectation. And lastly, also wanted to ask you, of course, we are talking about sounds, but there's also noise and a lot of negative noise and social media noise. Tell me, Veer, how do you kind of shut your ears to all of them, especially because this would also alcohol. be... No, I'm kidding. No, I'm joking. Please go ahead. Yeah, but because people will say that maybe you are showing the wrong side of India, the loud. You haven't seen the show yet. You don't know. Yeah, but how do you shut your ears to all the noises? I don't shut my ears to the noises. I think noise is also a beautiful thing. And if you ever have feedback for my show, I'll take your feedback silently, head down, mouth shut. I don't think it's wrong to have people express how they feel. If I'm going to take the freedom to talk to you about everything as an audience member and then charge you money, I have to honor कि आपकी भी तो आवाज है और मेरे भी तो कान है. So then I have to listen to that as well.
I'll listen to it. Will I act upon it? I don't know. But I'll definitely listen to it. वो आपका हक है और मेरा हक है. I have to respect you as an audience member. And I complain to BMS and we don't get tickets easily, so please work on that. See, even I don't get tickets to my show. I just have to do the show. So that is this thing. But I promise you, we will be playing large enough venues where I hope there will be tickets for everybody. हाय दीपेश दैनिक जागरण से. जी सर. वीर, चूंकि आप ये जो शो है वो अलग अलग स्टेट्स में होते हुए कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग खासियत होती है जी. तो कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके प्रति हमें काफ़ी सेंसिटिव भी रहना पड़ता है. कॉमेडी कर रहे हैं लेकिन कहीं ऐसी चीज़ें ना हो जाए कि लोगों को थोड़ा सा कहे कि उनकी भावनाओं को थोड़ा आहत पहुँचे. तो ऐसे में क्या चीज़ें ऐसी रही जिन पे कॉमेडी या लिखना या बनाना, ऐसे क्या साउंड्स रहे, क्या चीज़ें रही जिन पे काफ़ी चैलेंजिंग रहा और काफ़ी सोचना पड़ा कि हाँ किस हद तक क्या कर सकते हैं? सर आई थिंक वो शो के पहले जानना बहुत मुश्किल होता है. आई थिंक आपकी सेंसिटिविटीज मौसम की तरह होती है, बदलती रहती है हर घंटे के बाद. तो बेस्ट बेट इज कि प्यार के साथ एक शो लिखे और अगर आपको कुछ सेंसिटिव लगे आप हमको बताएं और उसके बाद देखते हैं. लेकिन शो के पहले जानना कि क्या सेंसिटिव होगा ये आपको, मुझको तो नहीं मालूम है. अगर कोई आर्टिस्ट है तो उनके पास बहुत पैसे होंगे क्योंकि दे कैन रीड द फ्यूचर. मैं वो आर्टिस्ट नहीं हूँ. सबसे फनी साउंड्स आपको इंडिया में घूमे हैं तो सबसे फनी साउंड आपको क्या लगा? अरे आप पैसे दे के शो पे आइए ना, फिर आपको पता चलेगा. सब आई थिंक ऑल साउंड कॉन्फ्रेंस पे आए. आई थिंक ऑल साउंड्स आर इक्वली फनी. आई थिंक कुछ इसमें पुरानी फिल्मों के भी साउंड्स हैं और एक सेक्शन है जहाँ हमारे जो ग्रेट कॉमेडियंस हैं ना फिल्मों में, उनको थोड़ा ट्रिब्यूट किया जाता है. आई थिंक बहुत सालों से देयर आर वेरी गुड कॉमेडी मैन in films who have been overlooked a little bit in the 60s, 70s, 80s. तो उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया जाता है मेरे शो में. I think that's the funniest part of the show. हेलो, दिस इज वैष्णवी फ्रॉम एड गली. जी. जब भी हम इंडिया टूर की बात करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, बट इन योर शो आई कैन सी देयर इज कन्याकुमारी टू कश्मीर. इज दिस? I've always started at the bottom here, no matter what I'm doing. But I do think, to be very honest with you, Kanyakumari में venue available था पहले. Okay. So we booked that first and hopefully by the time we reach the top, Kashmir में venue available होगा. Sure. That's it. That's the only reason we did it. So we'll go Kanyakumari upwards. Thank you. Yeah. If there are any questions on the tour and the scale of the tour for Chauvin as well, this will be a great time. This is Sukarna from Times of India. My first question is for Mr. Chauvin. Why is this such a landmark tour for Tribe Vibe? It's a landmark tour because I think it's Veer's biggest tour. This has been his vision, I think, for a couple of years now, and we're hitting a very big number. We'll be crossing a minimum of 100,000 fans nationwide. I think first time we are doing more than 15 cities. We will definitely try and do much more. So I think it's probably one of the biggest shows which we are doing, not just with Veer but as Tribe Vibe. Thank you. And I have two questions for Yes, ma'am. Veer. First question is this going to be just a stand-up special or something beyond than that? I think, usually stand-up special क्या होता है कि आप आए, comedian will have a mic और वो joke सुनाएगा, तो वो तो होगा ही होगा. It'll be a funny show. It'll be non-stop laughs. लेकिन usually stand-up special comedian के बारे में होता है. राइट कि देखो मैं लास्ट वीक आई वेंट टू द डॉक्टर, मेरी वाइफ ये बोली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ये शो आपके बारे में है, तो इट इज ऑलमोस्ट अ ट्रिब्यूट टू यू. इट इज अ लव लेटर टू इंडिया. तो वो ज्यादातर आपको कॉमेडी शोज में नहीं मिलेगा. आपके बारे में एक शो. एंड आई ऑल्सो थिंक टेक्नोलॉजी का थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें. इट विल बी अ वेरी इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस. तो आई एम एक्साइटेड अबाउट डूइंग दैट इज वेल कि अगर आप आए और आपको एक कॉमेडी शो तो मिलेगा, लेकिन अगर उससे 20% एक्स्ट्रा आपको मिल गया तो आई थिंक आवर जॉब इज डन वेल. Like you said, it's a love letter to India. जी. You traveling across the country for this show, which is your favorite corner in the country apart from Mumbai, and any interesting memory? My favorite place is Mumbai. Apart from Mumbai? No, it is Mumbai only. अगर आप देख लीजिए, मैं नोएडा से हूँ. I am
average looking, not very tall, some jokes in my mind, and it's my 20th year in Mumbai. My career is only possible in Mumbai. If you go to anywhere in Mumbai and you see beautiful, talented artists from everywhere coming, then you compare me to them. The fact that I'm able to do something like this is only possible in Mumbai. So it is very much, Mumbai is my favorite city. I am only possible in Mumbai, nowhere else in the world. Thank you. Do we have any more? मेरा सवाल आपसे सर कि इफ़ यू वांट टू से एनी स्पेसिफिक थिंग अबाउट दिस शो, अगर ऑडियंस को कुछ बताना हो कि ये चीज़ इस शो में काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो वो क्या होगा आपकी तरफ से? और वीर, इनके बारे में अगर आपको कुछ अलग साउंड देना हो आप, तो वो क्या होगा? मैं इतना फनी नहीं हूँ वीर की जितना, और मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ. कैश का साउंड ऑफ कैश. वन थिंग वीर डज इज सेल्स लॉट ऑफ टिकट्स. सो या बट मैंने तो एक ही बार शो देखा है उनका अभी तक. उन्होंने मैं एक्चुअली पहले मेरे को अलाउ नहीं किया था, बोला शो रेडी होएगा उसके बाद ही आना. बट दिस इज नॉट अ रेगुलर कॉमेडी शो विच वीर हैज बीन डूइंग फॉर मेनी ईयर्स. इट्स मोर थिएट्रिकल. आपको अलग अलग साउंड्स आएगा. जैसे वीर ने आपको पहले ही बताया, ये खाली कॉमेडी शो नहीं है. जिसने कॉमेडी शोज देखा नहीं है उसके लिए भी ये शो बना हुआ है. तो आई थिंक ज़्यादा बोलना नहीं, आप आ जाओ शो पे तो आपको रियलाइज होएगा. थैंक यू. Okay. Do we have any more? No. Okay, great, cool. That's a wrap then on the Q&A. Thank you guys for keeping it sharp, and thank you to the two of you for keeping it. It is officially on its way, and if today is anything to go by, I know you guys want a front row seat to it. We definitely do. On behalf of everyone here, on behalf of Showvain, on we, the entire team, thank you so much for joining us. Travel safe, dodge the traffic and the rain. Thank you so much. Thanks. We can do one photo op with Veer for everybody. Come on. Yeah. मैं उधर आता हूँ ना फिर. I think that's better. Yeah. And we'll take a moment. Shobin, you also go. Yeah. Can we get people in front? Can we sit together?